आदाब दोस्तों, मैं सुहेल फारूक और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले घंटी का बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में बर वक्त इत्तला मिल सके। लास्ट वीक में मैंने एक न्यूज़ देखी थी और इट वाज अ वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़। जब मैं यहाँ अमेरिका आया था तो समटाइम्स लोग मुझसे ये सवाल करते थे कि हाउ डू यू कंपेयर यूनाइटेड स्टेट्स विद योर कंट्री। तो मैं उनको हमेशा ये कहता था कि आई बिलोंग टू अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। बट इफ यू रियली वांट टू कंपेयर योरसेल्फ with a country or different countries, then you should be comparing yourself with Scandinavian countries, Germany maybe, and then Australia, New Zealand, of course UK. And then उस पे मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि what was my argument and how I proved that those countries are far superior in many different aspects and dimensions when you compare them with the United States. But the point here is that this video that I'm making is not about comparison of United States with any third world country like Pakistan. This is about something that happened in one of those countries which I thought, and I was of the opinion, and the world was of the opinion, that were the most peaceful countries, a group of countries in the world. I'm talking about Scandinavia, Norway, Denmark, Sweden, और अगर आप Nordic Scandinavia कह ले तो फिनलैंड भी उसमें शामिल हो जाता। But somehow Sweden is in great deal of trouble because of immigrant and migrants. और ये जितने भी जो refugees भी गए हैं, ये सारे के सारे पूरा यूरोप घूम के इस ईस्टर्न यूरोप में से भी गुजर के, तुर्की में से भी गुजर के, और फिर आखिर में जाके डेरा लगाते हैं या जर्मनी में या स्वीडन में। और अब नेचुरली एक वहाँ पे जो स्वीडन के अंदर भी एक एंटी रिफ्यूजी या एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट है वो डेवलप होना शुरू हो गया। और पागल हर जगह पे मौजूद होते हैं। पागल सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी मौजूद है, पाकिस्तान में तो जो है परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन एक पागल भी जो है वो पूरी कंट्री के इमेज को जो है वो खराब कर सकता है। और फिर दूसरी तरफ पे जब आपके पास लोग ऐसे हों जो कि आपके मुल्क में आके रहते हुए भी डर ना रहे हों, पाकिस्तानी मिनॉरिटीज की तरह ना हो कि पाकिस्तानी मिनॉरिटीज इस तरह की हरकत करके दिखाएं पाकिस्तान में जो भी स्वीडन में हुई है। तो मैं खबर की तरफ जाता हूँ, लेकिन उससे पहले प्रियम्बल में मैं आपको ये बताता हूँ कि जब ये माइग्रेंट्स या इमिग्रेंट्स वहां पे जाते हैं तो उसके बावजूद वहां की गवर्नमेंट उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करती है। और ये रिफ्यूजीज होते हैं या माइग्रेंट्स होते हैं या इमिग्रेंट्स होते हैं, उन लोगों की तरह नहीं होते जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में पैदा होते हैं, 20-20 जनरेशन से पाकिस्तान में पैदा, लेकिन क्योंकि मिनॉरिटीज हैं इसलिए उनके कोई राइट्स नहीं है। बट एनीवे, न्यूज जो है दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग, और दैट न्यूज इज के मैं आपके साथ न्यूज शेयर करता हूँ। हाँ जी, तो स्वीडन में देखें ये एक सूरत हाल चल रही है स्वीडन में। It's relative of course, but compared to 10, 20 and 30 years ago, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था, it's like another country. Also compared to our neighboring Scandinavian countries as well as the rest of Europe, murders in broad daylight on street occurs almost daily now. और ये नॉर्वे में स्वीडन में 2 दिन पहले ये सूरत हाल हुई कि स्वीडन में बड़ी शदीद किस्म की राइट्स हुई हैं ड्यू टू कुरान बर्निंग इवेंट। राइटिस्ट जो वहाँ के गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ये थ्रेट किया था कि हम कुरान पाक को जलाएंगे, और उसके बाद जो सूरत हाल हुई वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल हुई और उसके बाद अरेस्ट भी हुए। सो ये देखें, तालियां जलाई गई हैं, ये देखें, और फिर अल्लाह अकबर के नारे भी कुछ सुनने को मिले हैं, जैसे ये देखें।
अलावा इस तरह की न्यूज भी नॉर्वे में आ रही हैं, स्वीडन में आ रही हैं. In Sweden, Muslim rapists get 100,000 rewards from Swedish government, and the victim gets $340 to get herself painkillers. This is not an isolated event. It happens every day in Sweden. Last month, these Muslim immigrants did riots and terrorist acts in Sweden as well. Swedish rape victim has expressed anger that a Syrian migrant who raped her has been given 70,000 pounds sterling, which is equal to 96,000 US dollars, in damages by the Swedish state, while she has received just 250 pounds, which is equivalent to 340 US dollars, writes Christine Douglas William. The reason that the Syrian Muslim migrant was given nearly 100,000 USD for his crime, while his rape victim was given a meager 340 bucks, was because he complained that he was tried as an adult, but states he was a minor at the time of his crime. So, जनाब अली माइनर साहब ने काम डाला और उसके बाद फिर इसके ऊपर उसने जो है वो अपने चार्जेस भी जो है वो भी बढ़ा लिए हैं कि मुझे एडल्ट बना के जो है मुझ पे केस चलाया जा रहा है. This was accepted despite the fact that an overwhelming majority of Muslim migrants in Sweden lie about their age. Following the arrest of the two Syrians, इससे पहले भी एक वाकया हो चुका है, who had also locked up another woman in a basement for over 24 hours, Petra said she had to face them in a Swedish courtroom where she says they laughed at her. Petra was thus not only brutalized and mocked by the Muslim migrants, but also by her government, by her own government. फिर नीचे भी देख लें क्या हो रहा है. So, Sweden, which used to be a country, a model country in the world, is now suffering because of the migrants and refugees and the kind of human rights that Sweden is offering to the people who come from other countries. Now, some people would think that I have maybe an anti-Muslim sentiment. No, not at all. To me, everybody who migrates from one country to the other country should be given the equal rights. But the minorities in those countries from where these migrants are coming from, they should also think about giving the same kind of rights to the people living in their home countries. अब बात यही है कि जब अपने मुल्क में हम होते हैं तो हम अपने मुल्क की मिनॉरिटीज को बिल्कुल इंसानी हकूक नहीं देते, और जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो हम वहाँ पे माइग्रेंट्स होते हुए भी, वहाँ के सिटीजन ना होते हुए भी उससे ज़्यादा हकूक ले लेते हैं जो कि एक सिटीजन के होते हैं. So this is the food for thought. Of course, burning of Quran and threatening to burn the Quran or any religious book anywhere in the world, in any part of the world, for any religion, it's not only criminal, it's sinful and it's inhuman to me. लेकिन इस तरह के राइट्स करना और इस तरह के राइट्स करके फिर निकल भी जाना, ये कमाल आप सिर्फ यूरोप में और अमेरिका में ही कर सकते हैं. ये कमाल आप कभी पाकिस्तान में मिनॉरिटीज को करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे आनी हाथों के साथ जो है वो लिया जाता है. और दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि उनको उनके इंसानी हकूक नहीं दिए जाते. करने की बातें बहुत हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये सारी चीजों को सामने रखते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की लीडरशिप को और पाकिस्तान में रहते हुए जो मेरे दोस्त बहन भाई हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क में उन लोगों के साथ क्या करते हैं जो कि वहीं पे पैदा हुए हैं लेकिन उनका ईमान जो है वो हमसे फर्क है. मेरा ख्याल है ये आज के लिए काफ़ी है. इस पे सोचिएगा और सोच के जो भी जवाब हो उसको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा अपने हल्का अहबाब में. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट.